students. Welcome back. Uh, Good morning, sir. Hello. Good morning. आवाज सुनाई दे रही है Good सबको? morning, sir. Yeah. Good morning. Good morning, all of you. So today related your data communication internet part. That is internet related work. You know very well that internet have related email, surfing, uploading, downloading attachment files. Directly we can send a file from one computer to another computer easily within a second. So that is the part we have to see over there. Some of the types of connections, internet connection related, some internet related concepts, and then after that hackers, hacking part, sniffing part, that we have to see over there. So again, welcome back Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya Vasai West, Tybcom-V Sem. Subject is computer system and applications. Topic data communication and internet. uh, Module is there, internet. So related internet presented by our assistant professors 1-Bipin Vaity. So see that now, what is internet? Symboling. Internet is a worldwide collections of computer network. So that is a what we can say, the one computer can send the data to the another computer through the LAN, but from one computer to send the data to the another computer in a wide distance. So we are using internet is a media. So they are saying worldwide. Worldwide means any country, any city, there is a one computer and we want to send the file immediately. So we can use the internet media. So it is a cooperating with each other to exchange the data using a common software standard. It's a standardized, they are given the software, that is website. And there is a one organization, W3C. So worldwide consortium, that is the organizations, and that organization handles all that thing concept related internet. So I can say you there's some history, it is not given here, but I can say the internet is done by Tim Berners-Lee. Have you heard about Tim Berners-Lee, who introduced the internet in 1991? Before that, there's a concept related internet, who can send the data from one device to another device. But actually, in India, concepts are related internet come from the Tim Berners-Lee, who organized the total website, HTML part, and all that. It is in internet. So it can also be defined as the global communication system of diverse and interconnected computer networks for the exchange of information. See now, concept of global communication. We talk only one person, two persons, one city, but now all over the world, if you want to communicate, so you can use the global communication. Now at present, we are sitting at home and we are communicate to you. That means at home you are sitting and you can communicate to many people. That is called global communication system. After that, they are saying interconnected. Who are joining now? Okay, fine. Now, so there are interconnected computer networks for the exchange of the information. What do you mean that is the network? When you join the one of the people or one of the computer, so we can exchanging our information, receiving, sending part is a simultaneously we can do it. That means chatting part is there. We send the data, they send the data. That means they are exchanging the information from our side. So that is the internet is also called as the information superhighway. We get the any type of information on the internet. You can get the, now this is the PPT slide. We can get that information also on the internet. So it is a Google. Now we say the Google is the website, web server, who provides the all information. From Google, we can go to the another linking web server, and then we can find out the. So the internet is a what? Worldwide collection of the computer network that can exchange the data using common software standard. So it is a information superhighway. Internet is a information, and that words come from the intranet. I say the some of the history for there. One of the defense U.S. ministers, they use the intranet in the military system.
they when they are fighting, so that time they want the informations related that ki how many soldiers are there, how many locations are there, so we can go on directly, we can just shoot out over there. So that is the part of there. They require on the information through the computer, and they use the intranet. And after intranet, they are using ARPANET. ARPANET is an advanced research project agency. And then word comes from that situation, internet. Now intranet, after that it becomes internet. Got it? Yes, student? This is a small history they are saying over there. Anywhere you can find out in the Google. So internet is a media where we can collect super highway information, any information. So that is internet. Clear? Yes, student? Yes, student? Hello? Can you Yes, hear me? sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, types of internet connections. You know that many internet service providers are there. At present, we are using mobile data. That is also service provider. Your Vodafone, Idea, Geo. This is all internet service provider. So somewhat first time analog and dial-up connections are there. So analog and dial-up connections, that is used in the telephone line. So you know the BSNL is the telephone line who provide the connections to your telephone system, and after that we are using modem, and we can use the dial-up connection. Dial-up क्यों बताया? Because dial-up they provide you one of the internet connection, one number, and you have to insert in your software. And when you insert in your software, that numbers connect to your telephone number, and then they send the data to the BSNL tower, and then after that they receive your data and they sending packets of that internet. So जब भी हम लोग इंटरनेट टेलीफोन लाइन से लेंगे तो वी आर यूजिंग डायल अप कनेक्शन, दैट इज आर. पर ये बहुत पहले की बात है. बट नाउ at present we are using router system, so that we don't require modem. So modem is a device who convert the analog to digital signal, but at present now we are using router. ओके. सो डायल अप कनेक्शंस तो बहुत कम हो गए. अभी कोई भी सबके पास मोबाइल आ गया, तो मोबाइल की वजह से वो कनेक्शंस अभी दिखाई देते नहीं है. बट now some of the office also using the internet because that are using telephone system, क्योंकि उनके पास BSNL पुराना गवर्नमेंट ऑफिसर है, दे यूज द टेलीफोन सिस्टम. नॉर्मल टेलीफोन रहता है वैसा BSNL, VSNL. ओके. BSNL is a Bharat Sanchar Nigam Limited. VSNL is a Videsh Sanchar Nigam Limited. So these are all the systems, they provide you internet service provider, and then they collaborate the many telephone lines. Now at present privatization is there, so they are using Vodafone, Idea, many different Geo. These are all the companies, they own servers are there, and then after that they provide you service related internet. So I see ISDN. What is ISDN? ISDN is an integrated service digital network. It is an international communications standard for the sending voice, video, data over digital telephone lines. Just like mobile. मोबाइल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो वहां से हम लोग का वॉइस जा रहा है, ऑडियो जा रहा है, वीडियो जा रहा है. सो दैट इज ऑल पार्ट, इट इज रिलेटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. So we can say that their speed is the 64 kbps to 128 kbps. Now at present 1 mbps it is going on. So ISDN connection, इसको हम लोग मोबाइल के थ्रू भी हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, दैट इज ISDN. उसी तरह एक सेकेंड वन आ गया BISDN, दैट इज ब्रॉडबैंड ISDN. So it is similar in a function to SDN, but it transfer data over fiber optical. आपका सिमिलर है लेकिन ये डेटा ट्रांसफर कैसा फाइबर. तो देयर आर मेनी नाउ. जियो फाइबर आपने सुना होगा, जियो फाइबर दे प्रोवाइड द राउटर. जियो फाइबर्स होता है, और वहां से वो मतलब क्या, दैट ऑन टावर देयर इज दे यूज द फाइबर, एंड दैट फाइबर कनेक्टेड टू मेनी मोबाइल्स, एंड देन आफ्टर दैट दे रिसीव द डेटा. तो इस तरह का BSDN पार्ट आ चुका है. देन आफ्टर दैट DSL. DSL is a digital subscriber line. Now हम लोग सब्सक्राइब लाइन मतलब रेंटल बेसिस. अब इंटरनेट, पहले हम लोग इंटरनेट लेते थे, दैट टाइम वी यूज द 24 आवर्स इंटरनेट पैकेट. जो 24 घंटे का इंटरनेट पैकेट मिलता था, एक CD आती थी, वी इंस्टॉल इट एंड देन वी यूज द डायल अप विद द टेलीफोन लाइन, और फिर वो 24 आवर्स खत्म होने के बाद दूसरा परचेस करना पड़ता था.
So this is all that systems is there. It is internet related dial-up connection 24 hours on rental base. ओके, वैसे ही यहाँ पे DSL वी आर यूजिंग सब्सक्राइब लाइन. आप केबल वाले के पास जाते हो तो VDSL, जैसे आपका पता है कि देयर इज अ वसई केबल, तो दे प्रोवाइड द कनेक्शंस दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एंड इट इज अ फ्रीक्वेंट दे रेफर टू एज अ ऑलवेज ऑन. मतलब ये ऑलवेज ऑन होता है when you provide a router. So it is connections because it uses telephone line connected to the PC. आप पीसी को नेट कनेक्ट कर सकते हो. अभी राउटर आया तो वाईफाई भी कनेक्टेड कर सकते हो, बट वी कैन वो जो भी केबल लाइन उन्होंने प्रोवाइड किया है वो डायरेक्ट आप पीसी को अटैच कर सकते हो. एंड देन टेलीफोन लाइन इज नॉट अवेलेबल ऑन दैट कंसेप्ट, सो देयर इज अ नो नीड ऑफ डायल अप. उसके अंदर डायल अप है ही नहीं. There are main categories of DSL is that home subscriber are called the ADSL or VDSL. What is ADSL? Is a asymmetric and SDMSL with symmetry. Actually, two types of that DSL connections are there. So यहाँ पे all types of DSL are collectively referred to as the XDSL that is given. So asymmetric का मतलब क्या है? और अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ कि केबल लाइन, आपकी वसई केबल या सुविधा केबल या नाराज वगैरह जो भी केबल लाइन प्रोवाइड करता है वो भी आप लोग को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. उसको हम लोग बोलते हैं रेंटल बेस पे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. और उसमें दो टाइप आते हैं, असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक. तो असिमेट्रिक मतलब क्या? So it is the most common deployed types of DSL. It supports data up to 1.5 to 9 Mbps. अभी एक सिमेट्रिक और असिमेट्रिक का मीनिंग बता देता हूँ. सिमेट्रिक मतलब सिमिलर स्पीड, सिमिलर डेटा, सिमिलर टाइप्स ऑफ दैट डेटा वी कैन यूज इट ओवर देयर, दैट इज सिमेट्रिक. बट असिमेट्रिक मतलब क्या? देखो, एक सिमेट्रिक का मतलब एक जगह पे आएगा और फिर वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा. असिमेट्रिक मतलब वो कैसे भी डेटा आएगा वही तभी तक कनेक्टेड हो जाएगा, उसको बोलते हैं असिमेट्रिक. सो दे आर यूजिंग असिमेट्रिक टाइप्स ऑफ द DSL 1.5 to 9 Mbps receiving data, that is called the downstream rate. आजकल पूछ रहे हैं ना आप, टीवी के अंदर डाउनस्ट्रीम रेट होता है, वीडियो स्ट्रीम रेट होता है, वैसा ही यहाँ डाउनलोड रेट. तो आप कभी इंटरनेट यूज करोगे ना, उसका स्पीड दो तरह का होता है, एक डाउनलोड रेट और एक अपलोड रेट. अपलोड रेट इज ऑलवेज स्लो, अपलोड रेट इज ऑलवेज स्लो, बट डाउनलोड रेट इज फास्टर. ओके, अपलोड रेट मतलब समझ में आपको, आप डेटा जब दूसरे को भेजेंगे तो कितने स्पीडली डेटा सेंड होगा. तो आजकल तो दोनों सिमिलर, सिमेट्रिक में सिमिलर होगा और सिमेट्रिक में दोनों अलग अलग होगा. गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? Then SDSL, it is commonly used in Europe. Europe में symmetric digital subscriber line है. It requires a special SDSL modem. ये एक specially modem use करते हैं. And then in this type connection received in a speedily download rate is same as the sending speed. मतलब uploading and downloading rate same रहता है, इसीलिए उसको symmetric. Got it? Clear about that? ADSL, SDSL. Now VDSL, very high digital subscriber line. This technology that offers fast data rate over relatively short distance. छोटे डिस्टेंस के लिए VDSL कनेक्शन यूज करते हैं. सो छोटे डिस्टेंस के लिए मतलब अब नाउ इन 1 किलोमीटर एरिया अप टू वी आर यूजिंग VDSL पार्ट. तो आजकल VDSL केबल लाइंस प्रोवाइड करता है, और नॉट ADSL, SDSL, डायरेक्ट VDSL. एंड ADSL, SDSL इज प्रोवाइडेड बाय BSNL और BSNL पार्ट. तो यहाँ VDSL कनेक्शंस हम लोग ने मोस्टली देखा हुआ. नेक्स्ट थिंग, केबल कनेक्शन. ऑफ कोर्स नाउ थ्रू द यूज ऑफ केबल मॉडेम यू कैन हैव अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन. आजकल तो ये भी कनेक्शन टेलीफोन लाइन से यूज ही नहीं करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू देयर मॉडेम. डायरेक्ट आपको केबल वाला आपका मॉडेम देता है. ब्रॉडबैंड मॉडेम इज देयर. तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन दैट इज डिजाइन टू ऑपरेट ओवर केबल टीवी. जो केबल टीवी की लाइन आपको आती है, सेट टॉप बॉक्स आता है, उसी के अंदर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है. ओके, व्हाट आई सेड कि केबल सेट टॉप बॉक्स आता है उसी के अंदर, तो दैट इज केबल कनेक्शन. सो केबल इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग टीवी चैनल. जैसे आप टीवी चैनल यूज करते हो वैसे ही आप लोग इंटरनेट यूज कर सकते हो. सो विद सर्टेन चैनल्स यूज फॉर डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन and other channels for upstream transmission.
इसलिए आजकल आज टीवी, स्मार्ट टीवीज में आप लोग जो इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली चैनल देखते हो, इट इज अ वन टाइप ऑफ केबल कनेक्शंस एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन एंड अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन इज शोन ओवर हियर. इसका स्पीड होता है 1512 kbps to 20 mbps. आफ्टर दैट वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई, राउटर को इंटरनेट लगा दिया, वो राउटर के थ्रू मोबाइल में, टीवी में, जहाँ चाहिए वहाँ हम लोग को फ्यू शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग ने वो डेटा लिया. स्पीड आपको मालूम है कि यहाँ पे स्पीड उसका ज़्यादा होता है टेम्पररी, बट 51 to 20 mbps तक स्पीड होता है. बट कैसे शॉर्ट है, मतलब एक 100 mbps, 100 मीटर to 300, उससे ज़्यादा आप जाओगे तो उसका वाईफाई आना कम हो जाए. तो वाईफाई ऑलवेज वायरलेस इन शॉर्ट डिस्टेंस में ही यूज होगा. ओके, लेकिन इंटरनेट जैसे वायरलेस सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं तो उसका स्पीड कम होता है, बट सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स टावर में या वाईफाई में डायरेक्टली मिल सकते. तो बिफोर दैट एक बीच में टिकोना करके आया था, वो टिकोना डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू टावर्स और टावर्स के थ्रू आपको सिग्नल मिलते थे. ऐसे ही सिग्नल्स लेने वाले बहुत सारे आईएसपी प्रोवाइडर्स हैं. So wireless connect is one of the newest internet connection type which uses radio frequencies. Its access is considered as a relatively new, and it is always difficult to find wireless service provider in a certain areas. कभी कभी कुछ एरियाज में हम लोगों को केबल पहुंच नहीं पाती है, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ वाईफाई लगा के we are using the internet, that is called wireless internet connection. After that, those who want the 24 hours internet, 24 घंटा इंटरनेट चाहिए कंटिन्यूस, सर्वर रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे T1, T2, T3 लाइन्स लिया जाता है. दैट इज अ T1 लाइन्स कनेक्शंस और पॉपुलर लीस्ट लाइन, इसको हम लोग लीस्ट लाइन बोलते. एक लीस्ट लाइन, एक रेंटल बेस, डायरेक्ट 24 घंटा महीने भर का उनको पैसा दिया हुआ है और बोला हुआ है 24 घंटा हमारा इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए. उसके लिए डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द BSNL टू योर कंप्यूटर. So it is what business connecting to the internet and for internet service provider connected to the net. इससे हम लोग खुद जो ISP प्रोवाइडर होते हैं वो ऐसे लाइंस लेते हैं 24 घंटे का, एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट टू द मेनी अदर कंप्यूटर. सो दैट इज T1 लाइन. इसका स्पीड 1.544 या 1.5 mbps का होता है. इट इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 24 इंडिविजुअल चैनल. 24 इंडिविजुअल चैनल्स बनाए, इसलिए जो प्रोवाइडर होता है जैसे रिलायंस खुद का करके उन्होंने लिया है, तो रिलायंस दे प्रोवाइड जियो. ऐसे बहुत सारे आइडिया, वोडाफोन, दे गिव यू लिस्ट लाइन एंड आफ्टर दैट दे चार्ज यू ऑन 24 आवर्स. सो इट इज अ फ्रैक्शनल T1 एक्सेस ओवर देयर. ओके, यहाँ कैरी करना, यहाँ ट्रैफिक नहीं होती है बिकॉज डायरेक्ट लाइन होने की वजह से ट्रैफिक नहीं. द मोस्ट टेलीकॉम कंपनी अलाउ यू टू बाय जस्ट वन और सम ऑफ दिस इंडिविजुअल चैनल. कुछ खुद का चैनल खरीदी करते हैं और उस चैनल्स पे वो दे प्रोवाइड ऑल दैट इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं T1, T2, T3 लाइन्स आर देयर. ओके, mostly T3 lines are dedicated phone connection supporting data rate up to 43 to 45 mbps and is generally used by ISP for connecting to the internet backbone. मोस्टली आप लोग अगर घर पे कंप्यूटर्स वगैरह 24 आवर्स का वेब सर्वर क्रिएट करना है तो T3 लाइन्स यूज. आफ्टर दैट सैटेलाइट कनेक्शन, हैव यू नो अबाउट दैट सैटेलाइट? जैसे मैंने बताया टिकोना, वैसे ही डायरेक्ट टावर टू सैटेलाइट, सैटेलाइट टू आवर कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो सकती है, इसको सैटेलाइट कनेक्शंस बोलते हैं. अर्थ से 22,000 किलोमीटर है वो आपका सैटेलाइट है, 22,000 किलोमीटर ऊपर, फिर भी वो कनेक्ट डायरेक्ट स्टेट लाइन में. जैसे आपका डिश टीवी चैनल्स, आप डायरेक्ट वो डिश में वो चैनल्स लेते हो, और वैसे ही जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास डिश होता है और डिश में वो इंटरनेट लेते हैं एंड देन दे बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर, ISP प्रोवाइडर. हॉटस्पॉट, मोबाइल के थ्रू हॉटस्पॉट देना, लैपटॉप के थ्रू हॉटस्पॉट देके आप कनेक्टिविटी कर दो, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. इज अ DHCP पार्ट. ओके, डिजिटल हॉटस्पॉट पार्ट इट इज गिवन. ओके, नेक्स्ट. सो हैव यू क्लियर अबाउट दैट ऑल इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइडर किस तरह होते हैं? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो theoretically है, कहाँ से मुझे इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है, वो पार्ट उन्होंने बताया. एट प्रेजेंट आपको वसई केबल्स या जो भी VDSL केबल से मिल सकता है, या अदरवाइज जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वोडाफोन मोबाइल डेटा के थ्रू आपको मिलता है, फिर या वाईफाई के थ्रू में भी मिलेगा. तो वाईफाई में भी आपको इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से तो लेना, आशा नेट हो या जो भी हो. So that is your internet connections provide. Next concept is World Wide Web.
It is a collection of website. World Wide Web is a collection of website on internet. Of course, जो भी आप इंटरनेट पे ओपन करते हो, these are all websites that uses the hypertext transfer protocol http://www.google.com www.reddit.com www your sites जो भी आपका साइट है वो तो it uses a hypertext transfer protocol to transfer documents बिटवीन इट्स कंप्यूटर राइट आपके बीच में आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये वेबसाइट होते तो बहुत सारे कंपनीज they create their own website and all transactions all information sending part they go through the website जो भी स्टोरिंग पार्ट डॉक्यूमेंटेशन स्टोर करना है या ट्रांसफर करना है ट्रांजैक्शन करना है ऑर्डर करना है वो सारा पार्ट उनके वेबसाइट पे स्टोर होता है एंड इट इज ऑथेंटिकेट पार्ट होता है कुछ पार्ट हाइड होता है जो ओनली देयर एम्प्लॉय पर्संस दे कैन डू इट कुछ पार्ट यूजर होता है दैट्स व्हाई दे से यू टू लॉग इन ऑन देयर सो दिस आर ऑल दैट वर्ल्ड वाइड वेब it is a collection of website on internet through http protocol and we transfer the document between its computer so documents can be in any form it may be text it may be numbers it may be images audio video combination of anything. So WW could be very simply defined as a universal database of knowledge. आपको पूरा universally information चाहिए तो we are using World Wide Web and that is provided through the website and through on internet. So website it is a specific location to the WW. आपका एक लोकेशन होता है इट स्टोर्स आईपी एड्रेस सर्वर का आईपी एड्रेस होता है एंड स्टोर ऑन देयर all web pages are stored on that server so where information and details pertaining to company or individual where put the site are available so they say that I launched that site information is available on that particular website the specific location is there that it individual website has the IP address, internet protocol address. That is address is just like www.google.com we are typing. That is domain name. Google is domain name. हम लोग टाइप कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कन्वर्टिंग इट इज आईपी एड्रेस 127.0.01 जब आपका लैन कनेक्ट करेगा तो ये नंबर को कनेक्ट करेगा सो दैट इज वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वहां पर देखते हैं तो बहुत सारे HTML पेजेस होते हैं दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट के सारे वेब पेजेस होते हैं तो फर्स्ट पेज इज नोन एज अ होम पेज हम लोग को मालूम है कोई भी वेबसाइट का पहला पेज होता है वो होम पेज होता है सो इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML आपको वो बनाया कैसे जाता है ऑल वेब पेजेस आर डिजाइन develop first language that is HTML and it supports so many other language there is JavaScript, VBScript, scripting, PHP and all that many now at present website can develop through the Java also ASP.NET also there are many other languages but first of all design part every language is included with the unit that is HTML hypertext markup language so आपका वेबसाइट किससे वेब पेजेस किससे डेवलप होता है HTML से So web page is a document that contain link to the other. आपने देखा होगा वेबसाइट पे किधर न किधर क्लिकिंग पार्ट होता है एक हैंड टूल्स देते हैं उधर क्लिक करते हैं तो दूसरा कोई पेजेस दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक पेजेस दैट मींस डॉक्यूमेंट दैट कंटेन लिंक टू अदर वेब पेजेस other graphics audio file etc so these links are called hypertext or hyperlink वो टेक्स्ट को क्लिक करते हो उसको hypertext बोलते हैं when you click on it that is hyperlinks okay so many website have the pages first page is home page but when you clicking on somewhere and we go to the another web page that is called hyperlink web pages website address should be in the form of host subdomain dot domain that means see that now mu www.mu.ac.in it is your Mumbai University site तो मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट में यहाँ पे mu क्या है आपका डोमेन नेम है होस्ट है ना वो पहला जैसे गूगल द गूगल इज .com इज योर सब डोमेन्स वी कैन से द कमर्शियल साइट इंडिया साइट आयन या कोऑपरेटिव साइट गवर्नमेंट साइट .gov जस्ट लाइक दैट बट सब डोमेन भी होते हैं जैसे .ac नाउ इट इज गिवन ओवर देयर सो जैसे यहाँ पे दिया कमर्शियल कोऑपरेटिव साइट .co.in तो .co.in मतलब क्या कोऑपरेटिव साइट जस्ट लाइक तो मुंबई अकाउंटेबल साइट्स इज देयर तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी की खुद की साइट्स उन्होंने दिए थे कि वहां बोला है कि host डॉट सबडोमेन डॉट डोमेन इंडियन साइट सो आयन यूके साइट सो यूके यूएस these are PK Pakistan so these are all the sites
क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडेड विद द डॉट साइन, और उनको एक जोग्राफिकल और नॉन जोग्राफिकल डोमेन्स दिए हुए। जैसे आपको जोग्राफिकल है तो वी कैन से आयन, यूके, यूएस, एयू, ऑस्ट्रेलिया, लाइक दैट। और .gov, .co, .org, that is called government, organization, cooperative. This is all non-geographical domain. Got it? Okay, clear about the website and www? Yes, student? Hello? Yes, student? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay. So next part is the Yes, sir. okay. All internet part, where we view the internet, where we show the internet information. Of course, we open in the computer what? Web browser. In the mobile also we open the web browser. So it is a software application for retrieving, presenting, interacting, traversing information resource on the World Wide Web. जो भी आपको डेटा एक्सेस करना है, रिट्रीविंग, एक्सेस करना है, प्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है, इंटरेक्ट करना है, मतलब आपको दूसरे एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है, ट्रैवर्स करना है, उसके लिए एक एप्लीकेशन जो है वेब ब्राउजर। जैसे हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आता है, वैसे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन से रिट्रीविंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट, इंटरेक्टिंग पार्ट करना है, तो वी रिक्वायर वेब ब्राउजर। There are many web browsers like Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Many web browsers are there. Their own facilities are there. They interact that web pages and represent you. So all information traversing through the web browser on the World Wide Web, and information resource is identified by URL और उसको location होता है। आपने कभी एड्रेस बार देखा होगा, when you click somewhere it give you slash and what is the folder name, slash file name. This is the represent URL. URL मतलब uniform resource locator, that is file locations, and maybe a web page, maybe image, maybe video or other content. Okay, so information idea URL, URL से पता चलता है कि उसका फाइल कहाँ से आ रहा है। So browser are intended to use www and access information provided by web server. Of course, यहाँ पे हम लोग को जो भी ब्राउजर्स को इंडेंट करना है वो www and that is वर्ल्ड वाइड वेब एंड एक्सेस प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर। यानी कि गूगल क्या है? वेब सर्वर है। इस सारे जितने जन वेबसाइट बनाते हैं वो खुद का वेब सर्वर। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क और फाइल, वो उनके फाइल्स उन्होंने अपने कंप्यूटर में रखा है, वो 24 घंटे चालू रहते हैं ताकि आप कभी भी इंटरनेट यूज करके उनके फाइल्स हम लोग एक्सेस कर सको। सो वी आर सर्चिंग द डेटा ऑन देयर कंप्यूटर। ओके, हम लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करना है वो उनके इधर स्टोर्ड है और वहां से हम लोग रिट्रीविंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो सर्चिंग एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट इज कॉल्ड अ ब्राउजिंग। उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउजिंग, सर्फिंग, ब्राउजिंग, सर्चिंग। These are all the concept in the web browser. Web browser का मतलब, ब्राउजर का मतलब ही उन्होंने बताया कि सर्च सम डेटा ऑन अनदर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट, और वो एप्लीकेशन हम लोग को है वेब ब्राउजर। व्हाट इट, समझ में आया वेब ब्राउजर क्या है? सो देयर आर वेब ब्राउजर आर फायरफॉक्स, इन द बाय डिफॉल्ट कोई भी विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोर होता ही है। वी इंस्टॉल गूगल क्रोम एट प्रेजेंट, देन क्योंकि हम लोग गूगल यूज करते हैं तो गूगल क्रोम, गूगल कंपनी का खुद का गूगल क्रोम ब्राउजर है। फायरफॉक्स है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, देन गवर्नमेंट साइट के लिए फायरफॉक्स यूज होता है। ओपेरा आपके मोबाइल में होता है, सफारी आपका एप्पल मशीन्स में सफारी वगैरह ब्राउजर्स दिखाई देते हैं। सो दिस आर ऑल दैट वेब ब्राउजर। व्हाट इट नेक्स्ट, email. Of course, first applications in web browser we are using, that is email part. email मतलब हम लोग खुद का email बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो हम लोग सेंड करना चाहते हैं दूसरे को। तो ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे पोस्टमैन आपका मैसेज पोस्ट कार्ड से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, वैसे ही यहाँ पे थ्रू इंटरनेट वी कैन सेंड द ईमेल इजीली। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज and computer files between computer over a computer network. Within a second we can send a message and our attachment file also. So it is method through which message can be sent to the other internet users, and उसको जब भी चाहिए तभी वो अपना इनबॉक्स देखेगा। हम लोगों ने यहाँ से सेंड किया है तो वो डेटा इनबॉक्स ओपन करेगा, तब उसको वो मैसेज मिलेगा। जैसे घर के बाद आपका पोस्ट बॉक्स जहाँ पे मैसेज बॉक्स होता है वहाँ जब आप वो मैसेज बॉक्स ओपन करोगे तो वहाँ आपको पोस्ट कार्ड सब दिखाई देंगे। सो दैट इज सेम थिंग यहाँ पे they are using the concept that is electronic mail, only electronic, that is electronically we can send a message. So it is most frequently used component of the internet. It is also termed as a
किलर ऐप, ये किलर ऐप है, ये कभी खत्म नहीं हो। जिन्हें जब तक इंटरनेट है, जब तक आपके कंप्यूटर में इंटरनेट हो रहा है, वहाँ वो किलर ऐप है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल लगेगा ही लगेगा। दैट इज everywhere we have to create the email and we exchange our data. What is next? Block. Yes, sir. नेक्स्ट थिंग, अभी ईमेल के बाद Yes, sir. नया कंसेप्ट आ रहा है ब्लॉग, और हम लोग को मालूम है ब्लॉग क्या होते हैं आजकल। द वर्ड ब्लॉग इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टर्म वेब ब्लॉग। ओके, जो वेब ब्लॉग होते हैं, इट इज अ वेबसाइट यूजुअली मेंटेन बाय एन इंडिविजुअल, खुद इंडिविजुअली हम लोग मेंटेन करते हैं। देयर वेरियस फीचर ऑफ ब्लॉग कैन बी समराइज देयर। जैसे हम लोग पर्सनल डायरी रखते हैं, और वी कैन राइट द मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैंने आज क्या किया। जैसे बहुत सारे हीरो हीरोइन पॉलिटिशियन, दे राइट देयर ओन ब्लॉग, द पर्सनल डायरी, एंड पुट ऑन द वेब so as the share this information they share to the people. ओके, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग। जो हमारी पर्सनल इन्फो, पॉलिटिशियन लोग अपने कुछ तो ब्लॉग है, इसके ऊपर कमेंट करना, उसके ऊपर बात करना, इसके करना, तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉग। एंड इट इज ऑन ट्विटर, ट्विटर यूज होता है, बराबर, ट्विटर में ब्लॉग होते हैं। सो वेब ब्लॉग इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इमेजेस। यहाँ वेब ब्लॉग में कुछ इमेजेस शेयर करते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक में हमारा इमेज, स्टेटस में हमारा इमेज रखते हैं, दिस आर ऑल वेब ब्लॉग। एंड मीडिया फाइल्स अरेंज इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक रिवर्स कौन है, जो पहला ब्लॉक करता है वो नीचे नीचे चला जाता है, और जो दूसरा ब्लॉक करता है उसके ऊपर कमेंट करता है वो आगे ऊपर आते रहता है। दैट इज वेल, इट इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दैट कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, मीडिया, जो भी आप सेंडिंग करते हो, न्यूज ब्लॉग को हम लोग खाली बता सकते हैं न्यूज। आज इधर बारिश हो गया, आज इधर पानी भर गया, तो दैट वी राइट ऑन द ट्विटर, तो दैट इज ब्लॉग। एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगिंग, और इसी को हम लोग ब्लॉगिंग में आज का ब्लॉग, आज का डेट, टाइमिंग देख के हम लोग पता चलता है कि ये न्यूज अभी हुआ है, अभी पता चला है, तो दिस इंफॉर्मेशन वी आर स्प्रेडिंग ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग्स। ओके, दे आर यूजिंग न्यूज़पेपर, न्यूज वाले ब्लॉग यूज करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग, पर्सन हु कीप द ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर। जो सारे ब्लॉग यूज करके स्टोर करके रखता है, इसने क्या बताया, नरेंद्र मोदी ने क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बताया, वो सब सारी इंफॉर्मेशन पर्सन कीप करता है, उसको बोलते हैं ब्लॉगर। दिस आर ऑफ्टन रिटन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एग्जाम्पल फोटोग्राफी। अगर उसको फोटोग्राफी के बारे में बताना है तो फोटोग्राफी के ब्लॉग्स यूज करेगा, और उसके बारे में इन्होंने ये बताया, उन्होंने वो बताया, ऐसे करके उसके ऊपर नोट डाउन कर। पॉलिटिक्स के बारे में बताना है, इंटरटेनमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, तो दिस आर स्पेशल ब्लॉग। स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स पर्सन के इंफॉर्मेशन वो स्पोर्ट्स ब्लॉग में दिखाई देगी, पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स ब्लॉग में दिखाई देगी। सो एज अ न्यू एंटिटीज आर पुट up on a block, the older entries are archived. इसका मतलब नया एंट्रीज आ गया तो older entries, so this is the archiver. These old entries are not available on the mail blog website but can be seen in the archive section of the blog. तो वहाँ पे archives हो जाते हैं, मतलब वो ब्लॉग थोड़े expired बोलते हैं ना, expired हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। Then comments, this is a special feature of the blog. हाँ, कोर्स ये कमेंट होता है, एक आप किसी को भी साइट पे भी होता है कमेंट, आपके कुछ इन्फॉर्म कमेंट देना है, तो बैड कमेंट, गुड कमेंट, so this is the related views of the user. So this is a special feature of the blog. Visitor to blog can leave behind their comment on a form. एक फॉर्म दिया जाता है, write your name, mobile number and give comments. So this way they are using over there. Now IP address, 4 to 5 minutes are left, we have to continue. IP address, IP address सबको पता है, internet protocol address. Each and every computer when they are using internet, they have the unique address, that is a IP, internet protocol address. And this is similar to the telephone system where each subscriber has a unique telephone number. जैसे हम लोग यूनिक टेलीफोन नंबर देते हैं, वैसे यहाँ पे इंडिविजुअल जो इंटरनेट यूज करता है उसको एक यूनिक एड्रेस देते हैं, यूनिक नंबर होता है, वही नंबर, और वो नंबर इस तरह होता है, दैट इज लाइक, जैसे याद ही है 216 पॉइंट, सॉरी ये कोलन नहीं आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट 27.61.137. सो दैट इज अ, दिस इज कॉल्ड डॉटेड क्वाड नोटेशन। ये क्वाड नोटेशन दिया है 4 पार्ट्स में, 4 डिजिट्स ऐसे होते हैं अलग अलग, तो डॉट्स इज अ सेपरेटर ओवर देयर एंड इज अ सेपरेटेड बाय डॉट। इन ईच पार्ट द नंबर कैन वेरी फ्रॉम 0 to 2 है। यहाँ पे नंबर हम लोग 0 to 250 है, इसका मतलब बता दो। We can connect 255 first number, another 255 machines, another 255, just like that we can connect 255 255 255 clients on the one internet network.
सो देयर आर नो लीडिंग जीरोस, जीरोस लीडिंग होते नहीं। हाँ, ऊपर आगे जीरो भी लिखेंगे तो जीरो दिखा, 001 लिखा तो वो 1 ही दिखाई देगा। सो इट इज आईपी एड्रेस दस द फॉलोइंग एन इंडिविजुअल एड्रेस, ऐसे इंडिविजुअल एड्रेस क्रिएट। जब हम लोग गूगल लिखते हैं तो गूगल हम लोग को याद करने के लिए वो नंबर याद नहीं कर सकते, बट गूगल कन्वर्ट इनटू आईपी एड्रेस 127.0.0.1। जैसे हमारे राउटर का एड्रेस होता है 192.168.0.1। आफ्टर दैट another PC is connected 0.2, another PC is 0.3. So this is the they are connected. Yeah, we are giving the range 0.100 to 200, तो 100 और 200 के बीच में आपके PC कनेक्ट करने की परमिशंस है। So that is our IP address we are in. So mixture of decimal binary notation is not allowed, so the following address is invalid. ऐसे आपने लिखा तो वो एड्रेस इनवैलिड है, 11001, दैट इज इनवैलिड। बट आपने अगर प्रॉपर आईपी, और वो हम लोग कर सकते हैं इजीली, दैट इज इन द राइट क्लिक ऑन द ओपन नेटवर्क सेटिंग्स, गो ऑन एडाप्टर ऑप्शंस, राइट क्लिक and go on the IP4 versions and there we can put the number, but वो नंबर ऑटोमेटिकली रखने की वजह से हमेशा वो नेक्स्ट चेंज होते रहता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट आईपी एड्रेस जो आपके इंडिविजुअल पीसी से कहाँ से डेटा सेंड हो रहा है, कहाँ से डेटा रिसीव हो रहा है, उसका एक एड्रेस नंबर होता है वो है। तो दे विल ट्रैक ऑल्सो। अगर आपने कुछ एटीएम से जैसे पैसा आप लोग सेंडिंग करते हो या रिसीविंग करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसका ट्रैकिंग रखने के लिए ये आईपी एड्रेस काम आता है। जब आप लैन कार्ड इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ एक आईपी एड्रेस फिक्स हो जाता है, बट it is unique. Each address defines one and only one connections on the internet. So two devices on the internet can never have the same address. दो इंटरनेट डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो एक एड्रेस सेम रहेगा तो वहां पे मैसेज आएगा कॉन्फ्लिक्ट। We cannot connect the same IP address and send the data. So if a device has a two connection to the internet by two network, it has two IP address. Then they are saying that वो IP address की range बताए, class A, class B, class C, class D, class E. What do you mean that? वो रेंज आपको बता रही है कि एरिया वाइज रेंज होती है। जैसे हम लोग ज्यादातर क्लास सी यूज करते हैं 192.9, क्योंकि सर्वर के लिए 1 to 127 नंबर्स होते हैं, और आके वो प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करते हैं उसके लिए 128 to 191 नंबर होते हैं। हम लोग जो इंडिविजुअल क्लाइंट कंप्यूटर एड्रेसिंग करता है वो क्लास सी 192.1223 होता है। उसके आगे भी अगर सब टास्क जैसे मोबाइल डीएचसीपी प्रोटोकॉल पे यूज करते हैं 224 239 नंबर, ऐसे आगे जाके 255 नंबर है। ऐसे 4-5 क्लासेस दिए हुए जो आईपी एड्रेस को डिवाइड कर। दिस इज अ रेंज, इट इज शोन यू व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क्स वी आर यूजिंग, सर्वर, क्लाइंट, सब प्रॉक्सी सर्वर एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट डोमेन नेम, इसीलिए आईपी एड्रेस से डोमेन नेम बताया हुआ है कि वी आर नॉट राइटिंग एनी आईपी एड्रेस। अगर आपने लिखा ना आईपी एड्रेस आपको पता रहेगा तो डायरेक्टली एड्रेस बार में लिख सकते हो आप लोग 127.0.01, इट शो यू आपको डायरेक्टली गूगल। तो आप आईपी एड्रेस से लिखो या डायरेक्टली लिखो गूगल, दैट इज गूगल इज डोमेन नेम। हम लोग वो याद करने के लिए इट इज यूनिक, every number on the internet has unique IP and this numeric IP address has a difficult to remember